all. I hope you all will fine. Today we will continue our next one strategy, that is solar power through photovoltaic cell. And these cells are environment friendly. These 4 and 5 strategy left in the sustainable development, and then this one chapter will be photovoltaic cell, and especially these cells are environment friendly and it not exploit the nature, and the state of environment will automatically good when we using these cells. And because of innovative technology, we can easily convert into and use, with the help of these things we can use our electricity. So basically, when we talk about in these observation and when we talk about the solar power, that is India. First, India having so much sunlight, we can use to convert into the electricity. India is rich in these things. Clear? So India is endowment with abundant. When things are rich in manner, then we will use the word abundant. Sunlight, which is and these sunlight and sun we can easily get in. And this is the rich source of energy, and now we are using here sun rays and for converting into the electricity. So sunlight is both, we can say that it is an environment friendly things, and it is not exploit our nature and state of environment. We will use these things to convert into the electricity. So environment friendly, as well as we can say that it is non-exhaustible source of energy. Next, conversion of solar into electricity is no longer now difficult process when we will use the innovative technology. And now we are using so much innovative technology, and most of the MNC are using capital intensive technique, in which instead of labor, capital will be used, which means machine will do the work instead of labor. Labor will not of modernization, we can do these things easily. So a conversion of solar energy with the help of sunlight, with the using sun rays, in now electricity is no longer a distant dream with the help of innovative technology. So with the help of these technology, we can use the sun rays to convert into the electricity. So through the technology, now it became innovative things. So next strategy in this, that is, first we will these things solar energy. So basically solar energy, with the help of these energy we can convert into the electricity, is an effective answer because it is an environment friendly and it is not exploit our natural resources. Yeah, because already we did this thing, so much resources exploitations are there. So now we can use it, not only the problem of economic growth, but it is helpful in the sustainable development. Now it is not longer is create problem because these things are environment friendly. Nature will not harm because of this. So next in these only we can say that next one is mini hydel plants. These are also we can use this environment friendly process and way to generate, and because of their generate we can easily convert into the electricity, and through the, and especially these plants are using in the mountain region. So especially in the mountain region, which means in the hilly areas. So in mountain, perennial streams can easily be found. We can use more water, we can easily found streams, rivers are there. Mostly these things are found in the mountain region. So mini hydel plant used with the help of streams, with the help of river. So use the energy, those streams usually goes to the turbines, and because of these we can convert into the electricity, which generate electricity sufficient to meet the local demand people. And with these demand we can easily convert into the electricity. And these are specially, you can write first where it is found in the mountain regions, and these plants are found mountain region. With the help of streams we can convert into the electricities, and it is especially enough for sufficient the demand of the local person. So since these plants do not change the land use pattern, but it is less harm, so we can say that instead of any other electricity, it is an environment friendly process. So they cause lesser harm to the environment as compared to the hydro, as compared to a
power plant. So instead of hydro power plants in mountain region, we can easily found these things. What we will use mini hydel plant. So especially in this point you can write it, this is and these all the strategy are adopted, not harm the nature, not exploited the natures, and we can say that state of environment is automatically good because of using these things. These plants also reduce the loss of electricity through transitional process and distribution as they requires on the large scale industries and cables. So next in this about that is traditional knowledge and practice. Before the innovative technologies, farmer use which type of technology? Traditional practices, because they do not have enough money, so using the insecticide, pesticide, and using the chemical fertilizer. So what they done on that time, they did only the traditional practice and things, and because of that traditional knowledge they can do the practice. So traditionally these peoples who are indigenous, means we can say that local peoples, which type of things are used? They are doing farming activities, thinking about the nature, with the help of nature, or you can say that whichever they did on that time, traditional knowledge and practice, these things are environment process. We can say that these are environment friendly things. So environment instead of being controller, on that time they were not controller, they were doing farming activities, thinking about the nature, thinking about the soil fertility, and according to these only they are doing the things. So we can say that traditional knowledge of the indigenous people, who are, we can say that local peoples, is important for the biodiversity conversion, because these local people thinking about the nature, जो अब नहीं हो रहा because of capital intensive technology, because of innovative technology, the more machine will use and modernization are there. Right now we can say that अब क्या है, नई मशीन से वर्क हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी को लूज कर रहा है, बायोडिवर्सिटी में लॉस हो रहा है, क्योंकि नई मशीन्स क्योंकि नई टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, उस टेक्निक की वजह से वो लोग ये नहीं देख रहे कि सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो रहा है, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर ओन प्रॉफिट। जबकि तो आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि वो फार्मिंग एक्टिविटी के थ्रू क्या बन गए? कंट्रोलर। बिफोर दिस, यानी जब ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिसेस थी, या जो पुराने जो इंडिजिनियस पीपल थे, लोकल पीपल थे, वो नई मशीनों का यूज तो करते नहीं थे क्योंकि उन्हें ये चीज पता नहीं थे, वो अपनी टेक्निक, जो उनके पुरानी टेक्निक्स थे, मेथड थे, उसी के थ्रू वो क्या है, खेती बाड़ी करते थे। तो वो चीजें करने से बेसिकली क्या होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज की बेसिस पे वर्क करते थे उससे एनवायरमेंट कम हार्म होता था। तो अब दोबारा से, क्योंकि इतना ज्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन ऑलरेडी हो चुका है, एनवायरमेंट की स्टेट नहीं है, तो अब कुछ लोग अब भी क्या है, वही ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस थे उसका रीयूज करने लगे दोबारा, वही, क्योंकि वो नेचर को थोड़ा कम हार्म करता है। सो बेसिकली बिकॉज उससे पहले क्या है, अब तो कंट्रोलर बन गए बिकॉज ऑफ यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। उस टाइम पर कंट्रोलर नहीं थे, वो जब कोई भी फार्मिंग एक्टिविटी करते थे वो ये देखते थे कि सोइल की फर्टिलिटी रीगेन हो पाएगी या नहीं, सोइल की हेल्थ करेक्ट है या नहीं, उस बेसिस पे। नाउ सेम दे आर यूजिंग बिकॉज ऑलरेडी एक्सप्लोटेशन द नेचुरल रिसोर्सेज, सो कंजर्वेशंस आर देयर, मेंटेनेंस है, इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए, नेचर को ध्यान में रखते हुए वो क्या है, कोई चीजें करते थे। तो बेसिकली ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर अगेन they are using because they are environment friendly process. Sustainable development are there, process of economic development are like this, so that future generation also get natural resources. Right now presently they are using, but wasteful consumption are not there. If wasteful consumption is there, they are exploitation the natural resources instead of optimum utilizations of resources. So what will happen for the future generation? No one profit, yeah, no one resources are left remain. They are economically viable, and basically they are avoid the degradations of land. Maintenance of soil will be there. So likewise traditional health system of India based of use of plants without harm these plants.
So leaves are there, fruits, minerals, herbs, and these are things are there with the healing property. You can say that. Basically क्या बोला जाएगा को नेचर को हार्म किए बिना क्या है प्रैक्टिसेस करते थे. एक्सप्लोटेशन नहीं था उस टाइम पे. इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोटेशंस सेविंग्स आर देयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. दे वर नो लॉन्ग कंट्रोलर on that time. Right now controller are there because more innovative technologies are using, modernization are there. On that time there will be no modernization, no innovative technologies are there. Traditional practices and with the help of traditional knowledge they practicing will be there. So India is a 15,000 हम कह सकते हैं फ्लोरल फल फूल सब्जियां इंडिया में बहुत है स्पीसीज आर देयर. लेकिन अगर कोई चीज रिच इन मैनर है इट डजंट मीन कि आप उसको एक्सप्लॉइट करोगे. If you are continuously exploiting the natural resources, no longer resources are left for the future generation. And here we are adopting the strategies for according to the sustainable development. And sustainable development basically is the process of economic development in which we are optimum utilization of natural resources instead of exploitations are there. So we can say that 8,000 process medical properties are there. तो अब क्या है देसी तरीके से हम क्या सीख सकते हैं नीम के पत्ते उनके तरीके से या नीम का यूज करके आप क्या है एक्सप्लोइट की बजाय उसे एक्सप्लोर कर रहे हो. बेसिकली हैव बीन रेगुलर इन वेरियस ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट. उसमें क्या है इन चीजों का यूज होता था. अब मेडिसिन आने लग गया, अब मॉडर्नाइजेशन हो गया. उससे पहले तो मोस्टली देसी इलाज ही होता था. किसी भी प्रॉब्लम का कोई हेल्थ इश्यूज हो रहा है उनको इसी बेसिस पे क्या है जो हमने अपने वेद में पढ़ा है. पहले डॉक्टर नहीं थे, ये वेद लोग क्या करते थे नीम की पत्ती का यूज करते थे खुद को ठीक करने के लिए, या कहीं भी कोई चोट लग जाती थी, कुछ भी मेडिकल इश्यूज होता था तो ये चीजों की प्रैक्टिस होती थी. क्योंकि उन चीजों में टाइम तो लगता है बट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. So focus on traditional health system is expected because it is a good process and environment friendly. Not only exploit the nature but it is good for the human being also. So expected to protect and promote of growth of medical things using that one traditional knowledge. Plants implying conservation, जिससे biodiversity आपकी conserve रहेगी. Next, biocompositing. After the green revolution, so much insecticide, pesticide, they were continuously consumption. Now we have to consume more things so that no more exploitation of our natural resources are left. So India agriculture shift completely from जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया एग्रीकल्चर कैसा था. पहले ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पे वर्क करते थे. वो सोइल की हेल्थ को सही रखता था. नो मोर सोइल फर्टिलिटी या वी कैन से दैट नो मोर सोइल इरोजन वर देयर ऑन दैट टाइम बिकॉज ट्रेडिशनल नॉलेज विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ओनली प्रैक्टिसिंग्स आर देयर. बट ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इतने ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर लिया कि सोइल की हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट हुआ. बेसिकली हम कह सकते हैं उसकी वजह से क्या है एक्सप्लोटेशन ज्यादा हुए नेचुरल रिसोर्सेज के. दिस हैड लेड डिग्रेडेशन. इसने क्या किया पोल्यूशन ज्यादा किया. वाटर एंड एयर पोल्यूशन आर देयर और वी कैन से दैट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड आर देयर. सो गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप लिए कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, वेस्ट को एक साइड में स्टोर करके उसके थ्रू आप फार्मिंग एक्टिविटीज करो, ऑर्गेनिक मैन्योर. क्योंकि जो फूड होएगा वो टेस्टियर होगा और मोर देन टेस्टियर वी हैव टू टेक इनिशिएटिव रिगार्डिंग हेल्थ. हेल्थ होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए ताकि फ्यूचर के लिए कोई इंसान अगर उसकी हेल्थ ही सही नहीं होगी, ए साउंड माइंड इज अ साउंड बॉडी, अगर वही चीज नहीं होगी तो ग्रोथ कैसे होगी. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल बी नॉट देयर. तो अब बहुत मैंडेटरी हो गया ये स्टेप लेना. तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए कि जो आप केमिकल्स का यूज करके फार्मिंग करते हो आप केमिकल्स का यूज ना करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करो क्योंकि वो सब क्या है वो सब चीजें इन्वायरमेंट फ्रेंडली है. सो organic method of farming under the national missions or we can say that sustainable agriculture. As a component of these schemes farmers are being through we can say that vermicompositing means organic farmings are there. No more insecticide chemical fertilizer are using because it is not good for the soil health. Because of continuously using insecticide pesticides there pollution is created or we can say that degradations of land are there.
So the use of biofertilizer is being promoted as a part of scheme because these things are environment friendly. Last one topic, that is biopest control, because in these also chemical fertilizer or insecticide pesticides are no longer using, because these things are not good for the soil health point of view. So last one, the chemical pesticides कंटीन्यूएंट जो भी फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो टेस्टी होने के मतलब मोर देन प्रायोरिटी गिव टू द टेक्सचर हेल्थी नहीं होते. सो फूड प्रोडक्ट, सॉइल, वाटर बॉडीज, इवन ग्राउंड वाटर, एफर्ट्स मेड किए गए हैं ऑफ यूजिंग नॉट यूजिंग insecticide, pesticides, because these are not good for the soil point of view, soil health. So efforts are being made introduced, that is biopest control. Several type of pest controlling are there, because now no more chemical will be used. It is not good for the soil health. So extracted from neem, हम यहाँ पे आ गया, these things are there neem, and these method, इन method को encourage किया गया हेल्थ के, इन्वायरमेंट फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि दीज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. अब मिक्स क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन भी इंक्रीज किया गया, ज्यादा से ज्यादा हम पेस्ट जो अटैक है कम हो जाए. ठीक है, एनिमल्स और बर्ड्स को भी, इन सब के लिए पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बर्ड्स और एनिमल्स की भी हेल्प की गई. बेसिकली आउट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी वी कैन से दैट वी आर यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिकॉज दीज ऑल द थिंग्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. ये इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं कर रहा, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा. नाउ यू कैन स्टडी ऑल द स्ट्रेटेजीज रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड ऑल दीज यू कैन राइट दीज थिंग्स कि दीज थिंग्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. जो भी हम स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे. Till you can read all the topic regarding to the strategy of sustainable development. Tomorrow we will continue with the next chapter, that is comparatively development, and about neighboring countries, that is India, China and Pakistan. Till you can read all this topic. I hope you like this video. Thank you. Have a nice day.